will be telling you about your subject, that is database or DBMS, database management system. So actually the half of the syllabus is covered by file organization. So that's why I've given the name, you can see on screen, is file organization part 1. So on Saturday I have uploaded a video for your DBMS lab. I think you have already run those programs. I just told you about how to create a table and then the entries in that table I have told you. So today probably I will be teaching more for the lab purpose also. So this is now about the file organization. So starting off this, and myself you already know is Ms. Surbi Saroha. So coming to the syllabus part of it, it is sequential. I will be discussing about file organization, index, sequential, random access and hashing techniques. So all these things we will be covering. First of all, the sequential. Sequential, if I say, okay, what do you mean by sequential? Because in computer, one thing very good is that whatever the term's meaning in English is, it has the same related meaning in computer as well. So if you know the meaning of it in English, you are probably knowing it in computer as well, because it's the same thing, right? So sequential is some kind of series or in a particular sequence, right? So the easiest method of file organization is sequential method. In this method, the file are stored one after another in a sequential manner. There are two ways to implement this method. Now number one is pile file method. So number one is what? Pile file method. Now what do you mean by pile and file and method? So it's a pile. Pile means ek ke upar ek rakhna, we are making a pile of it, right? So file method. So this method is quite simple, in which we store the records in a sequence, that is one after other, in the order in which they are inserted into the table. So you can see the diagram below. It says this is how the file is done, and this is starting of the file, that is R1, and the last one is end of the file, that is R4. Right? Coming to the second is sorted file method. In this method, as the name itself suggests, whatever a new record has to be inserted, it is always inserted in a sorted, ascending or descending manner. Now you know what is meant by sorting. Sorting is either you arrange the data in ascending order or descending or descending. या तो बड़े से छोटा छोटा हो या छोटे से बड़ा बड़ा हो, कोई भी order हो, it should be in a sorted manner. So sorting of records may be based on a primary key or any other key. Now primary key क्या होता है? DBMS में प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अभी तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है. सो प्राइमरी की डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. प्राइमरी मतलब होता है कि कोई एक हम की ले लें जिसे हम अपना की नोट बनाएं कि इसी की को देख के हम सपोज एक मेरे पास रैंडम नंबर्स है, ठीक है, और रैंडम नंबर में मेरे पास मैंने एक प्राइमरी नंबर ले लिया 10. तो 10 जो प्राइमरी नंबर है, 10 से छोटा छोटा मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड डिजिट्स रखूँगी और बड़ा बड़ा जो 10 से बड़े डिजिट्स है वो मैं राइट हैंड साइड पे रखूँगी. सो दिस इज द प्राइमरी की आई हैव टेकन एंड आई एम कंसिडरिंग दैट की, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट की आई एम डूइंग माय सॉर्टिंग पार्ट ऑफ इट. फाइन. सो इसमें डायग्राम देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है, स्टार्टिंग R1 इज द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, एंड अगर हमें न्यू रिकॉर्ड दैट इज R2 इंसर्ट करना है तो वो इसमें सॉर्टिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स R1 के बाद R2 आएगा, फिर R3 होगा. दैट वे इज इट. Coming to the pros and cons of sequential file organization. Pros मतलब क्या होता है? Pros means a positive aspect and con means a negative ones. So pros क्या है? Fast and effective method for huge amount of data. बहुत fast होता है, simple design होता है, files can be easily stored in magnetic tapes, that is cheaper storage mechanism. और cons क्या है? Cons मतलब drawbacks, time wastage as we cannot jump on a particular record that is required, but we have to move in a sequential manner which takes our time. Sorted file method is insufficient as it takes time and space for sorting records. तो अगर आप सॉर्ट कर रहे हो तो आपको टाइम भी चाहिए उसमें और आपको उसके लिए स्पेस भी चाहिए, मेमोरी स्पेस, राइट? सो दीज आर द कॉन्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज इंडेक्स सीक्वेंशियल. अब देखो मैंने आपसे अभी बताया था कि इंग्लिश का मतलब अगर आपको पता है तो हिंदी का भी पता होगा, मतलब कंप्यूटर का भी आपको पता चल जाएगा, राइट? सो इंडेक्स का मतलब है कि हम बुक में इंडेक्स देखते हैं, उस इंडेक्स को देख के हम डायरेक्टली उसी चैप्टर के उसी पेज पे उसी टॉपिक पे पहुंच जाते हैं. तो
इसी तरीके से इंडेक्स सिक्वेंशियल है कि इंडेक्स बना रखा है, उसका सीक्वेंस है, हमें किसी भी रिकॉर्ड पे जाना है तो हमें वो सॉर्टिंग एक करके नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसे अप्रोच कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्स। तो ये क्या कह रहा है, इन दिस सर्चिंग मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फाइल्स इज क्रिएटेड दैट कंटेन्स सम स्पेसिफिक ग्रुप और डिवीजन ऑफ रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। व्हेन द इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड then the particular indexing takes less time cause it is located in a specified group. Note, when the user makes a request for a specific record, it will find that index group first where that specific record is recorded. तो directly उसी पे जाएगा, right? तो characteristics क्या है index sequential search के? In index sequential search, a sorted index is set aside in addition to the array. So sorted index is assigned एडिक्टेड, ठीक है, एक सॉर्टेड इंडेक्स होता है, जैसे आपकी बुक में आपका इंडेक्स होता है ना स्टार्टिंग में, तो उसमें सब कुछ सॉर्टेड होता है कि ये वाला टॉपिक इस पेज नंबर पे है, राइट। सो ईच एलिमेंट इन द इंडेक्स पॉइंट्स टू अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ऑन अनदर एक्सटेंडेड इंडेक्स, एक्सपैंडेड इंडेक्स, ठीक है। द इंडेक्स इज सर्च फर्स्ट देन द एरे एंड गाइड्स द सर्च इन द एरे। नोट, इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च एक्चुअली डज द इंडेक्सिंग मल्टीपल टाइम like creating the index of an index. अब ये डायग्राम के थ्रू आप समझिए इसे, एक्सप्लेनेशन बाय डायग्राम ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च। एक इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है और एरे है। तो ये क्या कह रहा है, 40 इंडेक्स 1 जो है वो बता रहा है ये इंडेक्स 2 40 पे जा रहा है, और इसने बताया कि जो 40 का डाटा है वो अब आप देखो कहाँ है 40 का डाटा, इसमें एरो नहीं कर रखा, 60 का बताया, 60 का यहाँ है 60 पे, 80 का यहाँ है 80 पे, अगेन एरे में 80 पे, तो दैट वेज, राइट। Sequential. Coming to the third part, that is random access. अब random मतलब क्या होता है, randomly आप कुछ भी चूज कर रहे हो, राइट। तो direct access file is also known as random access or relative file organization. That means directly आप उस पर जा रहे हो, उसे random access भी बोलते हैं और direct access भी बोलते हैं। In direct access files, all records are stored in direct access storage device such as hard disk. The records are randomly placed throughout the file. तो जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी वो रेंडमली प्लेस है पूरी फाइल के अंदर। द रिकॉर्ड्स डज नॉट नीड टू बी इन सिक्वेंशियल बिकॉज दे आर अपडेटेड डायरेक्टली एंड री रिटन बैक इन द सेम लोकेशन। दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज यूजफुल फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ यूज इन एसेसिंग लार्ज डाटाबेसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैशिंग। तो आप रेंडम एक्सेस को हैशिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, डायरेक्ट एक्सेस फाइल हेल्प इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इन डायरेक्ट एक्सेस फाइल सॉर्टिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। IT accesses the desired records immediately. IT updates several files quickly. Actually it's not ID, capital में लिखा था तो I'm reading it ID. It is it, okay fine. So it has better control over record allocation. So it has better control over record allocation. It updates several, मतलब अपने आप ही अपडेट कर देती है ऑटोमेटिकली, सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है, इमीडिएट एक्सेस हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं कि डायरेक्ट एक्सेस फाइल डज नॉट प्रोवाइड बैकअप फैसिलिटी, तो बैकअप फैसिलिटी नहीं होती। इट इज़ एक्सपेंसिव, कॉस्टली होता है वो। इट हैज़ लेस स्टोरेज स्पेस एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल फाइल, तो स्टोरेज स्पेस भी लेस चाहिए। कमिंग टू द हैशिंग टेक्निक्स। हैशिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हेन वी वांट टू रिट्रीव अ पर्टिकुलर डाटा, रिट्रीव मतलब अगर हमें इसे ग्रैब करना है या अप्रोच करना है, लेना है, it becomes very inefficient to search all the index values and reach the desired data. In this situation, hashing techniques comes into picture. Hashing is an efficient technique to directly search the location of desired data on the disk without using index structure. Data is stored at the data blocks whose address is generated by using hash functions. The memory location where these records are stored is called as data blocks or data bucket. तो ये कह रहे हैं कि जहाँ वो मेमोरी जिसमें वो स्टोर्ड होता है डाटा, उसे हम डाटा ब्लॉक्स बोलते हैं या डाटा बकेट भी बोलते हैं। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हैश फाइल जो होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, उसमें एक डाटा बकेट होता है, उसमें एक
हैश फंक्शन होता है और एक हैश इंडेक्स होता है। इसका डायग्राम भी होगा अप्रोच, आप पहले डायग्राम देख लो फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करें, बिलो गिवन, ओके दिस इज द डायग्राम, सो दिस इज